कहते हैं कि जो माता है यहाँ पे वो सप्तशृंगी है एंड इन्होंने ही महिषासुर का संहार किया था। महिषासुर एक बहुत बड़ा राक्षस था एंड तो कहते हैं कि उसका संहार किया था एंड देन शी गेट ऑन द टॉप ऑफ इट, टॉप ऑफ द मंदिर, टॉप ऑफ द गढ़. दैट्स व्हाट वी आर कॉल्ड द सप्तशृंगी गढ़. यू कैन सी निवास देव ट्रस्ट. ओके, so after that what happened is कि I'll just keep my shoes first of all. So that's the top of the mandir and this is the Shakti Peeth. So I'll tell you why it's called Shakti Peeth. If you don't know what is Shakti Peeth, first of all let me just explain it. When Shankar was carrying the corpse of Lord Mata Sati, as you can see, this is Saptashringi Mata, kept here like this. He has to taken his her corpse and roam all the world. So by doing that, there was a constant constant devastation of the world was happening. So what Vishnu did, he cut the body of the Lord Mata Sati, the first wife of Shankar Bhagwan, and the various parts of the body fell on various parts of the earth, and in those parts that body parts fall, those parts are called Shakti Peeths. So I was not aware of these things many times or part time, but right now I'm aware of it. So it's beautiful mandir. So Maharashtra has 3.5 Shakti Peeth. The half one is this one, the Saptashringi. So yeah, we're going by the step one and इसका ही मार्ग है, कहते हैं कि आपका रोपवे का, and I don't know रोपवे कितना है. I will just search it out. I'll tell you. Okay. So let's go man. All arrangements I can say is proper arrangement है यहाँ पे, like everything. Okay, पानी and all, everything. So that's good. That's Maharashtra for you man, the richest state. So yeah. So what Mataji did, she बता दिए शक्तिपीठ क्या है. एंड लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट सप्तशृंगी माता. यहाँ पे टोटल ऑफ 7 गढ़ है, 7 पहाड़ इसको कहते हैं. एंड दिस इज वन ऑफ द पहाड़ ऑन विच सप्तशृंगी माता इज देयर, एज यू कैन सी. एंड देयर आर मेनी पहाड़ और डोंगर यू कैन से नियर बाय, लाइक टोटल बोलते हैं 7 है. एंड इसीलिए 7 को सप्त भी कहा जाता है, इसलिए उसको सप्तशृंगी माता का दर्जा दिया गया है. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पहाड़, मार्कंडे पहाड़ दैट्स कॉल्ड. आई हैव नोन इट फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम. आई डिडंट थॉट टू क्लाइंब इट. इट्स गुड रियली. Yeah, it's looking beautiful. On the top of it there is a Markande Baba. So yeah, one time I'll go and visit it man, for sure. But for now we're heading towards the Saptashringi, and I will, while on this beautiful step route, I will just tell you more and more about this beautiful temple. The Saptashringi Mata ki jai. Reach some, I guess, how many CDs I don't know, but yeah, maybe 50-60. So I just want to tell you, there's a Krishna Bhagwan Mandir also. So yeah, there's a 7 mountains around it. That's why this Devi is called Saptashringi. And in front of it you can see the Markande Parvat. One thing I want to say is there's a Krishna Bhagwan Mandir also. One thing I want to say is that this comes under the Nashik district, and a small village called Vani near Vani, I can say. It's a small village. This village I don't know,
I just let you know. But this is all the story about the Saptashringi Mata. Kalwan village, this is called, all everything. And this is Saptashringi Mata. ये मराठा और कुछ हिंदू रिलीजन के लिए ना ये बहुत मान्यता वाली देवी है, ठीक है. और या दैट्स मोर थिंग अबाउट इट. एंड ये स्टेप्स जो है ये मराठा साम्राज्य के समय बने हुए हैं. एंड यहाँ पे कहते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए थे पूजा पाठ करने के लिए. सो दिस इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिंग आई हैव एक्सपीरियंस राइट नाउ. एंड एक और चीज़ दिखाता हूँ. सो दैट माउंटेन यू कैन सी दैट Dhodap. I have gone there also. Like it's second mountain of Maharashtra, second tallest I guess. So yeah, that's for me. And as I will go up, I'll more let you know. But we have to go up now, okay? Because there are total of 510 steps like this to the mountain top of the Saptashringi Mata. And yeah, as you know, there's the service also that what to say, the beautiful ropeway services also. I'll let you know. But I've skipped this for a very long time, Saptashringi, because I was thinking what kind of Mata is, but after seeing many reels and the indications of come to this mandir, I am forced to come. So that's why by spending around 250 to 300 rupees, I came here. And so now we are on the top. So let's go and explore this beautiful Saptashringi mountains and mountains. Coming like for only half a kilometer trek. You can see the Mata's face. I don't know, but yeah, that's the face of Mata Saptashringi Devi. ज़्यादा लंबा नहीं था, बिल्कुल शॉर्ट था, बिल्कुल हाफ एन आवर लगा मेरे को. एंड ऑल ओवर अराउंड. तो फिर गो ऐसे ही द लाइन ऑल अबाउट. एंड yeah, we'll go and see. Then easy peasy lemon squeezy, I guess. So I will show you and I will go inside. I will show you the very closer view of the mandir. Here you can see the darshan of the Saptashringi Devi, and this is self-manifested, what you can say, Swayambhu Deva form of the Mata Durga. And कहते हैं कि she came here and जो हाथ हैं उनके सातों पर्वत को डिफाइन करते हैं. There are many monkeys around here, so I guess you have a good look of it and take the darshan. It's a very clear view and monkeys around here like this. So like this, it's a very beautiful place. What I'm telling is कि yeah, this the form of manifestation of Mata Durga in the form of Saptashringi on the hill of the Saptashringi Devi. One of the experiences I get. But I'll tell you, this whole mandir has been on the top of a hill called Saptashringi, and वो सामने मार्कंडेय बाबा का मंदिर है. कहते हैं कि when Lakshman was shot by the Meghdut, he came here in the search of Sanjeevani, the Hanuman, and that's why this mandir has a greater relevance in the Ramayana also. And भगवत पुराण में भी कहा गया है शक्तिपीठ के बारे में. There is a 3.5 शक्तिपीठ in all over Maharashtra, and this is the half शक्तिपीठ. 3 शक्तिपीठ में से है रेणुका माता first, and then you have Tulja Bhavani, and the third one is I guess I don't know. I just searched about it, and this is the half one. So one of the rarest to come. And कहते हैं यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज भी आए थे. And that's all about it. But yeah, fascinating mandir, I guess. So the biggest murti of Mata here I've seen, the self-manifested murti. Okay, it's not made; it's self-manifested. So very good.
things I have to watch when you're in Nashik. Great. Jai Mata Di. I'm trying to show you the very closer look as soon as I can get. So I don't know how much time it will take. It's good. So the darshan has been happening. I guess when you're coming here, prepare for a 1 hour line. The line is here. Yeah, darshan will be good. Let's go. So yep, we are closing towards the darshan, and let's see. I will get the darshan now. I'll show you from the start because very likely you will not see it, but I am really pleased now. So after some time I'll keep my mobile, so sorry. Here there's the full view of Saptashringi Mata Devi. Really, Jai Mata Di. After a long line of like half an hour to 40 minutes, I saw the good darshan. And Jai Saptashringi Mata Devi. Kripa karna. So after the darshan, we have come across various things, really various things. But yeah, one thing for sure, that the darshan was epic. You can see the Saptashringi Mata very far away. So yeah, that's very good. And it was a good experience, man. Like all the pain I have to take to come to here was worth it, I guess. So worth it. So yep, that's the whole girl of the Saptashringi. Markande chale gaya. Very good Parvat was there, man. Have a look. It's something shape, triangular shape, and the top you can see that one. It's a good one. I don't think so I will go. This time, sorry. But man, really, you see the grandness of it. It's way too big. And यहीं पे हमारी सप्तशृंगी माता जी हैं टॉप पे, तो हाफ शक्तिपीठ। अब मैं तो बताना भूल गया कि वाई इज कॉल्ड शक्तिपीठ, बिकॉज यहीं पे माता जी का राइट हैंड गिरा था, so prominent. Okay, let's go and let's see what more we can do in Saptashringi. Okay. अब जूते पहन लिया मैंने एंड मौसम तगड़ा बनाया हुआ है। ओके, अभी लेट्स टेक वन फोटो ऑफ माता जी बिकॉज यू नो दैट्स इम्पोर्टेंट। बारिश होने वाली है। That's why you can see all the things getting up. So let's see what we can do. Okay, we'll get out. Okay, I want to take some photos, but surely I'll take good photos, man. To try. Oh, hop a bit, and here we are again going towards lodge Jai Saptashringi Mata, and for tour of the lodge, क्योंकि यहाँ पे ना भक्त निवास भी है, तो कहते हैं कि 100 रुपये से लेके 2000 रुपये तक सारे रूम्स मिल जाएंगे आपको। ऑब्वियसली 100 रुपये वाला तो भरा ही होगा, बट you can come here and you can see for yourself. I guess I'm going towards that to have a look, and yep, I've asked the ropeway guy, telling me कि ropeway 200 per person पड़ता है। That's very
very costly, man, really. But that's the ropeway and that's the pedal mark, so we can do it. So now we are going towards the Bhakti Niwas to see what they have to offer, and then we'll push off, okay? Because it's already 2:30 and we don't have time now. Okay, but time I'm telling because see the atmosphere change, because this is all pahadi area, no? It changes rapidly here. So let's go and see where the Bhakti Niwas. Hey Dada, hey Dada, Bhakti Niwas किधर है? Good people, let's go. भैया ये निवास के लिए यहाँ बुकिंग करना पड़ता है? हाँ, रहने के लिए। कितना लगेगा इसका? 100 रुपये से 2000 तक। अच्छा, मतलब 100 रुपये वाले में खाली मिलता है कि फुल रहता है अभी ये सीज़न में? खाली रहते हैं। खाली रहता है ना? थैंक यू. तो I'll ask the guard why they need to go inside. So yep. There's one more thing you can go and explore. There's the Prasadalaya over there. But I don't know if it's there or not, so let's go and see it. We'll go. Let's go, man, because my shoes are slipping. But let's see. Okay, I need to buy new shoes. I have bought a new shoes, but you know, I'll take it out and just on the Chardham Yatra. Let's go. Bhakti Niwas ये सामने है. 100 रुपये तक टिकट मिल जाएगा आपको. एंड आई गेस द भोजनालय in front of it. Let's get going, man. Let's see what it is. That's the person. And you have to take the coupon, I guess. So let's take the coupon because, you know, I'm just confessing in front of all of you. पापा गांव चले गए हैं, सिस्टर भी गांव गई है. खाना बना नहीं रहा हूँ क्योंकि ड्यूटी से टाइम ही नहीं मिल रहा. आप ही देख रहे हो कंटिन्यूस व्लॉगिंग. तो क्या हुआ ना कि आई डोंट हैव टाइम. तो कूपन किधर मिलेगा सर? चलो ऊपर चलो. तो व्हाट आई हैव डन कि आई नीड फूड रियली. सो यप, सो आई एम हैव सम फूड बिकॉज वन एक so let's go and have some food. And obviously बारिश भी हो रही है. We'll have to. So that's the Prasadalaya for you. If you don't know, Bhakti Niwas के जो सामने मिलता है. You don't have to worry. That's the Prasadalaya. Okay, you go and eat. And you will enjoy, man. कूपन 20 रुपीज़ का है. 20 वाला है, 60 वाला है. 20 वाला. So ये प्रश्न थाली. And we are going towards the eating center. Okay, there it is. Let's go and have it, man. Okay, 20 वाला 60 वाला 20 वाला खाने में भूख लगी है जोर से भाई. वेट करेंगे. ओह गॉड, जय बोले. खाने का आपको नहीं पता रहेगा जब तक आपको भूख नहीं लगती है. So that's all the counter over here. And yep, we'll eat somewhere here. It's cleaner. Wait here. So let's go and eat. लौकी की सब्जी, चावल, रोटी on the top. Okay. So now enjoy the food really. I'm craving this for a very long time, man. Really. To see that 20 rupees में इतना खाना. And that too looking delicious really. Thank you. And this one, what do you say, meatloaf. Delicious really. Oh yep. No. Tasty. That's the prasadalaya for you, man. It's all empty right now.
It's closing time, but yeah, people are studying like this and eating. Refill also. थोड़ा थोड़ा कड़ी very good deal, I guess, of what you're getting. So, yep, it's a good deal, man. So let's enjoy it. I'll let you know. Fuck it. Happy. My food has been done. Sorry, and that's Pakistan. Pakistan was very old, but and waiting for the train to stop. I will be moving ahead, and you can see the darshan of the girl Saptasungi. अभी एक और जगह शिवालय है, पार्किंग है, बट बारिश होते तब जाऊँगा ना. My turn is over in Saptasungi Garh, and Prasad Ale was good, but Barish is pouring out continuously, man. And you can see the Garh over there. I really want to catch it up. Let's go and धीरे धीरे निकलते हैं, क्योंकि I don't think इधर रुक के कोई मतलब है अभी उससे, क्योंकि मेरे को ना सर नहीं भीगना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि ना फिर मेरे को बुखार हो जाता है. दैट्स माई वीक पॉइंट. अदरवाइज बाकी सब जगह में मैं ओके की कंडीशन में चल लेता हूँ. ठीक है, जो पहला पॉइंट है उधर चलते हैं, उधर रहते हैं थोड़ी देर, देखते हैं बस उसका, फिर निकलते हैं. I have told you I have bought one for the home to Saptasungi Mata. That's a good one. Okay, so as I told you, many ones there, but this was a wooden acrylic one, and it's a good looking paper. So let's pack it. Okay, भैया पैक कर दो. So yep, 80 rupees. A good one, good deal, I guess. So I guess I'll pack it up and we'll leave for Nashik. Okay, from this view of the Saptasungi Mata, I've bought from here the photo and all, and look at the view. It's a big mountain, man, really. The top पे भी जा सकते हैं वैसे, but we have to find some route, because you can see on the top there is one jhanda. Yep, and on top, yep, always a good shopping when you buy a souvenir for home. So I guess we'll be moving now, because it's been late now. So home, 80 rupees for the Saptasungi Mata photo, and yeah, I'm happy, really. Jai Saptasungi Mata. चलो अपनी लाल, एंड लेट्स गो. ये डायरेक्ट जाएगी towards what do you say, towards it will go towards Vani. Hey, Vani जाइल ना भाऊ नहीं. So let's see क्या होता है. I guess I don't know when I will come and see this, but one of the thing, yeah, and going towards home or Vani or Nashik. Let's see what happens. Jai Saptasungi Mata. Jai Ho. What I'm telling is we're going towards Vani. What do you think? Okay, I'm not going to Nashik, because Nashik will not get the train for Lasha today. So we'll go back to Nepal, and from there we'll go to Marmad.
that's a very wise option. I'll get the buses and all, so I will, but I'll take my chances. So, yep, leaving the Sahyadri and the Saptashringi Mata. Bye bye. Here we are at back at कौन सा है ये है वनी बैक एट वनी में। यहाँ से वापस बाहर निकलना है, देखते हैं आसपास कुछ मिल जाए तो। जस्ट सीखी गर्मी बारिश थी, इसलिए मैंने ये ओढ़ के रखा था। वनी स्टॉप सिंपल सैंपल पिपड़ गाँव चलते हैं या देखते हैं आसपास कुछ और मिल जाए तो, या नेपाल या कुछ भी। तो ऐसे जय भोलेनाथ। तो yep, we'll go to Pimpalgaon. I have to reach Pimpalgaon first because एक ट्रेन है। हैं पिंपळगाव जाय कुठे जायचं तुम्ही? बस पाहिजे ना। हां पिंपळगाव जायले बस। नाशिक तिथे आहे, नाशिक गेला नाशिक नहीं, वो नहीं है, अभी नहीं है, बैठो अभी नहीं है, ये पिंपळगाव है। हाँ yep, there's a train, there's a bus and let's go man। बैठते हैं इसमें, निकलते हैं। क्या टाइम वेस्ट करके भी मतलब नहीं है, क्योंकि थिंग इज़ 7 बजे एक ट्रेन है, सो मेरे को डायरेक्ट छोड़ेगी बरला, नो सॉरी बरला। तो आई गेस दैट्स अ गुड ट्रेन टू गो, दैट्स व्हाई आई एम हियर। लेट्स गो कैच इट। यप, दैट्स माय बस टुवर्ड्स Pimpalgaon। I'll see, we'll see from Pimpalgaon what to go, but currently it's like 4:30, so don't take some risk and go right away. So yeah, I'm happy. And today's station, I love it. That means traveling to Nepal for the railway station, and yep, after some time I will catch a train from Nepal, and there's one train at 8 o'clock from Nepal, so hopefully we get it, so I'll get it. And one thing is that there's one local like special train from Manhar, but it's very late I don't think we will today, but other plans, just trying to do what has come to my mind, okay? The situation prove करेगी वही करूँगा, ठीक है? We are at Pad railway station, and it was a very good trip as I am concerned, but have a look at that beautiful sunset, man. Woo, it's looking good. So we are back at the Nepal railway station, and यहीं से मेरे को ट्रेन मिलेगी जो मेरे को वर्धा छोड़ेगी, ठीक है? So let's go, and a beautiful short trip is coming to an end, क्योंकि अभी डायरेक्ट ट्रेन पकड़ूंगा और निकलूँगा, ठीक है? थोड़ी सी बसेस चेंज करने पड़े अनमोला, बट आई एम फाइंडिंग अ वेरी नियर रेलवे स्टेशन, सो टू द ट्रिप्स, तो मेरे को शायद दिक्कत होगा और हो ही रहा है, बट अपनी ओके, आई डू इट माई वे। वी आर हेडिंग and I'm really happy. I visited Saptashringi Mata, and it was the experience, like really. So yep, this all get up and all everything will change because we are going for the Char Dham now. So then I have to get the look and all, trim करूँगा सब कुछ, और बाल भी बढ़िया पहले वाले लुक में आऊँगा।
तब तक के लिए थोड़ा सा बचा के रखता हूँ। कोई देखने वाला है नहीं भाई, हमको कोई पूछता वछता नहीं है। डैड है पूछते हैं तो यार नेपाल डैड है पूछते हैं, तो अभी गाँव गए हैं, तो वरना मैं दाढ़ी वाड़ी बना के रखता था। अभी कोई है नहीं, मैं बनाता तो हूँ नहीं। मैकेनिकल इंजीनियर चल जाता है कोई भी कैसे भी। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग एज हिप यार लिंक टुवर्ड्स होम। कल नाइट ड्यूटी है, पहले ही पहुंच जाऊंगा, बट आई टेक रिस्क मैन। लेट्स गो बड़ी, लेट्स गो। तो ये गॉट ट्रेन था, पूरी फुल है, तो नो सीट फॉर मी। आगे होगी तो इसी में चढ़ जाऊंगा, ठीक है। नहीं हुई तो लेट्स सी व्हाट इट इज। गुड मॉर्निंग, सुबह के 5 बजे एंड वी आर एट वर्धा। शाम के आई गेस 5 बजे में पहुंचा था, सॉरी शाम के शाम के 6:30 आई गेस जब बैठा था मैं वहाँ से शाम के 5 बजे आई गेस, तो नहीं शाम के सॉरी बैठा था वहाँ पे रात के 9 बजे और यहाँ पे 5 बजे उतरा हूँ। वी आर एट द वर्धा स्टेशन, माई वन ऑफ द फेवरेट स्टेशन बिकॉज ये मेरा घर के पास है आई थिंक। एंड ब्रश करते हैं, निकलते हैं, कुछ खाते हैं, ठीक है। वी आर एट वर्धा, थिंग्स टू बी हैप्पी बिकॉज आई एम इन वर्धा राइट नाउ, ओके। एंड आफ्टर दैट विल सी व्हाट वी कैन डू। अभी आई एम हैप्पी दैट आई एम इन वर्धा एंड बस निकलते हैं यार। करता हूँ, नींद हुई नहीं क्योंकि खाली थी नहीं ट्रेन, थोड़ी सी भरी थी, तो पर दैट बट कभी कभी नहीं होती है, नहीं ठीक है। यू हैव टू मैनेज थिंग्स, तो दैट्स द थिंग। हाँ नींद नहीं हुई इस बार, और ट्रेन भरी थी पूरी, भरी कैसी पता नहीं, मैंने ट्राई नहीं किया सोने का, बट कोई नहीं। जो 2-3 घंटे we have from Vardha to Pallasha, we'll sleep in that, and I guess I'm hungry also, that's why I'm not getting sleep anything, so let's go। train was good, मैं ब्रश करता हूँ और निकलते हैं। तो yep, good morning to all of you, अगर नहीं बोला है good morning तो let's go and कुछ खाते हैं because I'm seriously hungry। and there's my shop open जहाँ पे बहुत टेस्टी पोहे मिलते हैं। एंड I'm not lying, मुझे बहुत दिनों से पोहे खाने का था, बट I didn't have it, तो let's go and have some पोहा में, because पोहा is like let's go। So here comes my poha, and I know it's not that good, but it tastes better than anything else। From this one, and सुबह 5 बजे delivering of the food। Good, correct। I mean, I've been waiting for this for so long। Really, I'll let you know। Going back towards the Vardha junction, and it was a good experience, and the poha was super good, so I enjoyed it a lot। And
अभी चलते हैं वादा स्टेशन अपने वापस एंड होपफुली ट्रेन मिल जाए और मिल ही जाएगी। 6:30 बजे की ट्रेन है। अभी करंटली इट्स लाइक 5:35 तो 1 घंटे बाद जाएंगे चल के ट्रेन में एंड वही नहीं है एंड दैट्स बैक टू द वर्धा स्टेशन। सो यप आई वेट एन अ गुड फूड, गुड मील यू कैन से, द पोहा एंड द चाय। Oh, it was something else. So yeah, we are done, and that's it for the morning breakfast. And abhi let's go towards the railway station. I'm trying to eat very low food because I'm getting fat, and the trekking seasons are very near because बारिश and monsoon आने वाला है. So yep, keeping the low diet so that I can travel more and eat less. So yeah, that's the case. So let's go now and चलते हैं अपने जर्नी पे। जय बोले। So that's not today to my hometown Balasha. Seen a good food, I've seen many things, but yeah, this is my train for the what is a good food, and yeah, it will take me to my hometown, so I'm gladly happy. Okay, I don't know how much time it will take, but yeah, that's for sure that it will help me reach my hometown. So yep, oh my god man. Jai Shri Shambhu. Yep. Very sleepy. Okay. And yep, I'll sleep now. I'm really sleepy right now. One of the bite poha yaar. I love poha. So sleep in meeting sometime. Okay. Yeah. We have reached my hometown. Beautiful Balasha. Yeah. कुछ नहीं है अभी ज़्यादा तामझाम यार, फोकस्ड एंड पहुँचना है जल्दी से जल्दी घर को। तो ट्रिप अच्छा भी था, बहुत बढ़िया। सप्तशृंगी माता आज का तीसरा दिन है एंड परसों निकले थे और आज पहुंच रहे हैं। तो आई एम हैप्पी व्हाट आई हैव एंड यू शुड बी टू ऑल्सो। द डील मैन, यू हैप्पी एंड व्हाट द फक यू वांट एंड एज यू नो खर्चा हुआ है 400 रुपीज़। और आने जाने का ज़्यादा लगा वैसे, बट वैसे तो शॉर्टेड था। शॉर्टेड था, बाकी सब तो ज़्यादा लगा नहीं। 400 रुपये तक 400 रुपये तक लगा। तो दैट इज़ एडमिसिबल, नॉट अ प्रॉब्लम। अभी कुछ नहीं है, घर चलते हैं। Meet you sometime. So as always, love the one you love and I love you friends. मिलता हूँ जल्दी, एक छोटा ट्रिप निकालता हूँ 2 दिन छुट्टी लेके एंड फिर उसके बाद तो 4 धाम है 26 तारीख से। आज की तारीख है 11, हार्डली 15 दिन भी नहीं बचे हैं। तो इसको मैं